Good morning. Welcome to Hindi is Easy. Today we are going to see the line by line explanation for the lesson मेरा नाम है बिजली, lesson 6, class 4, वानी हिंदी पाठमाला. Hope you would have seen the previous video, the line by line reading of the lesson. If not, I'll give the link in the description box. You can go and check the video along with the book and read the lesson one or two times and check your pronunciation. If you still not subscribe my channel, please subscribe my channel and recommend among your friends circle. If you have any clarification or feedback, please put in the comment section. I surely reply back. If you like the video or the video is useful for you, please click the like button. Your subscription and like will motivate me to add more videos. If possible, please join as a channel member to support my effort and time. Before getting into line by line explanation, let's do a quick introduction which is given in the book. पाठ चर्चा मेरा नाम है बिजली. पाठ में आत्मकथा शैली द्वारा बिजली के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई है. सो आत्मकथा लाइक ऑटोबायोग्राफी स्टाइल. So the current itself telling about what it is, how we have to use the electricity. So in the Atmakatha Shaili, the style of autobiography itself, the description about electricity in the brief is given in this lesson. संक्षिप्त जानकारी means brief information. बिजली हमारे देश में कब आई? When the electricity came in our country. उसकी आम जीवन में कितनी और क्या उपयोगिता है? In the normal life, how much it is importance and what are the uses? और उसके क्या क्या खतरे and what are the danger things or precautions we have to take? और ऐसे कई बिंदुओं पर इस पाठ में प्रकाश डाला गया. सो इन दिस ऑल दिस थिंग्स टॉपिक्स द लाइट हैज़ बीन थ्रोन टू गिव द अवेयरनेस अबाउट इलेक्ट्रिसिटी. बिजली का प्रयोग अगर कुछ सावधानियों के साथ किया जाए तो वह हमारी बहुत मदद करती है. इफ़ यू आर यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी इन ए cautious way with the precautions, then it will be very helpful for us. आजकल बिजली द्वारा चालित यंत्रों का ही प्रयोग अधिक किया जाता है. So nowadays in this era we are using many machines which runs using electricity only. स्वचालित सीढ़ियों, the self running steps, the escalators, lift या फिर तेज रफ्तार से दौड़ती मेट्रो, द मेट्रो ट्रेन, सभी बिजली की ही मदद से चलती है. दिस ऑल रन्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. द लेसन कन्वेज द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर डे टू डे लाइफ्स एंड द लेसन ऑल्सो कन्वेज द सेफ्टी मेजर्स टू बी फॉलोड व्हेन यू आर यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी. हियर जो चीज़ बिजली से चलती है उन पर सही निशान तथा जो बिजली से नहीं चलती उस पर गलत निशान. सो देयर आर एन एक्टिविटी इज गिवन वेयर there are few appliances and things. You have to mark tick for the things which uses electricity and you have to put a cross mark which doesn't use electricity. So just observe the picture and do it correctly. हमारे आसपास अनगिनत ऐसे उपकरण, अनगिनत means uncountable appliances are there जो बिजली से चलते हैं, which runs with the help of electricity. अपनी पसंद के ऐसे किसी उपकरण को चुनकर उनके बारे में संक्षेप में लिखिए. सो यू हैव टू सेलेक्ट वन सच appliance which you see around you and you have to write the brief about that appliance which you like. जैसे उनका आविष्कार, when it was discovered, how it is used, what are the benefits and what are the negative aspects of that machine or that appliance you have to write. What is the message of this lesson? पाठ का संदेश, बिजली जितने काम की है, सो हाउ मच ऑफ यूसेज इज देयर फॉर इलेक्ट्रिसिटी, लापरवाही करने पर वह उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है. इफ़ वी आर इग्नोरिंग, इफ वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ, इफ वी आर नॉट शोइंग एनी प्रिकॉशन, देन इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर अस ऑल्सो. अतः सो बिकॉज ऑफ दिस उसका प्रयोग बहुत सावधानी से करते हुए उसका लाभ उठाना चाहिए. विद अ लॉट ऑफ प्रिकॉशंस, विथ कॉशियसली वी हैव टू यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड टेक द बेनिफिट आउट ऑफ इट. सावधानी is the cautiousness order, we have to use it. Labh is the benefit. Okay, लापरवाही is negligence. If we are not following the precautions and showing negligence, then it will be very dangerous for us. Hence we have to use electricity with cautiously and take the benefit out of it. So this is the message given from this lesson. पाठ का उद्देश्य, what is the objective of this lesson? बिजली कब और कैसे बनती है ये समझना. सो वी हैव टू लर्न फ्रॉम वेयर द इलेक्ट्रिसिटी वॉज प्रोड्यूस्ड. बिजली के लाभों व प्रयोगों के बारे में बताना. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउ इट हैज़ टू बी यूज्ड. बिजली प्रयोग के खतरों और सावधानियों से अवगत करवाना. यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द प्रिकॉशंस विच वी हैव टू टेक and the danger things that may happen if you are not
following the precautions. So you have to be aware of all these things. So awareness irukunu, you should know how you have to use the electricity and what are the precautionary measures which have to be handled while we are using the electricity. Competencies, the various competencies. बिजली के उपकरणों के नामों को जान सकेंगे. So all the appliances which is using electricity will come to know. पर्यायवाची या विलोम शब्दों की समझ को विस्तृत करेंगे. We also understand the opposite and the same meaning words. बिजली के संबंधित जानकारी का विकास. We develop the information about electricity through this lesson. के प्रतिफल, what is the learning outcome after reading this lesson? वस्तुओं के आविष्कार के विषय में जानने को उत्सुक रहते हैं. So we should be very curious. उत्सुक means curious to understand the discoveries when the things were discovered. Okay. बिजली के प्रयोग में सावधानी बरतते हैं. So when you are using the electricity, you have to be very cautious. The precautions has to be followed. बरतते means you have to follow those things. कुछ वैज्ञानिक तथ्यों के प्रति जिज्ञासु होकर प्रश्न पूछते हैं. So वैज्ञानिक तथ्यों means the facts, scientific facts you have to understand. You have to increase your curiosity towards the scientific facts and you have to ask questions. So this is the learning outcome of this lesson. Apart from that, you have to improve your vocabulary and also improve your pronunciation. So now the electricity itself is addressing and introducing and telling about how, where, when it has come to India, how it is produced, who has discovered electricity and what are the raw materials used to produce electricity. Like an autobiography, the electricity itself is introducing it and giving the details, brief details about its speciality. So come, let's learn the lesson and understand line by line. So hello bachcho, electricity is greeting the students. We are reading, right? So it is greeting us. पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? How your writing and studying is going on? क्या कहा? बिजली नहीं है. So what you said? Electricity is not there. इसलिए अंधेरे के कारण पढ़ाई नहीं हो पा रहा. Since it is dark outside, you are not able to study. और तुम मुझसे नाराज हो and you are anger on me. अरे बच्चों, मैं तो आज तुम सबसे खुद मिलने आई हूँ. So today, so it's addressing the students and telling today I have come myself to meet you all. खुद मिलने में I have come self from अंदर to meet you people. मेरा नाम है बिजली. So it is introducing my name is electricity. वही बिजली जिसे तुम कभी लाइट कहते हो and same electricity. Sometimes you tell us fan, sometimes you tell us light, sometimes you call me as बत्ती कहकर भी बुलाते हो. So you call me as बत्ती. मैं तो तुम्हारे इलाके में लगे ट्रांसफार्मर से चलकर खंबे तक आती हूँ और वहीं से मोटी मोटी तारों से गुजरती हुई तुम्हारे घरों में पहुँच जाती हूँ. So I am the same electricity who comes to your house through a transformer and from the transformer there will be a post, खंबे will be there and through the post there will be a thick strings, wires will be there and through which passing through that I'll reach your house. This is how the electricity reaches home. So these are the very big thick rods through which the electricity is passed and it is a bijli house, the where the production of electricity happens and it is stored, and through the transformer and through the post the wires are there and through the post only through these wires only it reaches our house. Before getting into the lesson, I have few questions for you. So what are the precautions you will take while you are using the electric appliances? Put in the comment section and list me few electrical appliances which you see around you which uses electricity. Also in the comment section, what are the electric appliances you know that uses electricity? Okay, if current is not there, then how it will be for you? You will feel so bored. You have some other thing to do the activity if current is not there at home. What happens if the current is not there for continuously for 2 days? Just think and let me know in the comment section. So why do we need to save the electricity? Every time mother says, father says, switch off the light, switch off the fan. Why do we have to save the electricity? Because electricity is produced using the natural resources and we have to save those natural resources. So if we are continuously using those natural resources, then next generation we will not be able to give these resources to generate such electricity and the next generation cannot use usefully. Okay, so we have to save and protect our natural resources to give to the next generation. So coming to the lesson,
मैं दिन भर तुम्हारे कितने काम आती हूँ. सो थ्रू आउट द डे. दिन भर मीन्स थ्रू आउट द डे आई हेल्प यू टू डू मेनी थिंग्स. कितने काम आती हूँ मीन्स आई एम हेल्पिंग यू टू डू मेनी थिंग्स. तुम्हारी पढ़ाई, फॉर योर स्टडीज़, पापा के ऑफिस के काम, द ऑफिस वर्क ऑफ योर फादर. आजकल तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया वह कंप्यूटर. एंड द कंप्यूटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इज अ नीडी थिंग एट होम, राइट. महत्वपूर्ण मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट. कंप्यूटर भी तो मेरी शक्ति से ही अपनी बैटरी चार्ज करता है. सो कंप्यूटर ऑल्सो यूजिंग माई पावर, माई एनर्जी ओनली, इट charges the battery, right. So we have to switch on the laptop and charge it, and then only we can use the laptop using the battery, right. So for that battery to be charged, we have to use the electricity. मम्मी की रसोई में उनकी झटपट मदद करने वाला अधिकतर उपकरण जैसे मिक्सी, माइक्रोवेव, इंडक्शन चूल्हा, फ्रिज आदि सब मेरे ही कारण तो चल पाते हैं. सो द उपकरण मीन्स द अप्लायंसेस which the mother uses to do the work easily. झटपट ना क्विक का वाला मुड़ी करते हैं. What are the appliances that mother uses in the kitchen like mixie, microwave, induction stove and the fridge. Everything uses my electricity and everything runs because of me, because of electricity. Let me show you few images. See how many electrical appliances we use in our day-to-day life. So all this needs electricity, right? This is the induction stove. दादाजी को भी तो जब समाचार सुनना होता है, then grandfather has to listen to the news. समाचार ना news, then what grandfather will do? Will switch on the TV, right? Just say quickly he will switch the TV switch. He will switch on the TV switch. Television चलने लगता है. As soon as the switch is on, the television will start to. अब मैं अपनी कितनी तारीफ करूँ. सो नाउ हाउ मच ऑफ अप्रिशिएशन शैल आई डू फॉर माई सेल्फ. तारीफ ना अप्रिशिएट करने के लिए हाउ मच आई नीड टू अप्रिशिएट माई सेल्फ. पहले ज़माने में तो इतनी चीज़ें बनी भी नहीं थी. येस, ड्यूरिंग ओल्डन डेज दिस मेनी अप्लायंसेस नॉट देयर, दिस मेनी थिंग्स वर नॉट देयर, दिस मेनी यूसेज ऑफ प्रोडक्ट्स वर नॉट डिस्कवर्ड एट ऑल. इसलिए अगर कभी मैं रूट भी जाऊँ, सो इफ सम टाइम और इफ आई सकल, नो वन विल give much importance. Everyone's work will be keep on going, right, because not much work is dependent upon electricity. So if I become anger or a suckle, तो बहुत सारे काम चलते रहते हैं. Many works will keep going. So nothing is dependent upon electricity that the work will stop and nothing will happen. Not like current situation. पर आजकल तो मैं हर जगह हर काम की सबकी सहयोगी बनी हुई हूँ. So nowadays, but not like that. Nowadays in each and every place, जगह ना each and every place, हर काम में. So in each and every work, सबकी तो for everyone सहयोगी, associating with every products that has been used in each and every place. सहयोगी means I am associating myself with everyone. बड़े बड़े मॉल में, if you go to the big malls, स्वचालित means self running सीढ़ियाँ that we call as यानी escalator or lift. So you have traveled in escalator and lift, children? Yes, if you go to the malls, you can definitely find escalators and lift. And अथवा बड़े शहरों में and in the big cities, तेज रफ्तार, the very high speed. तेज means high, रफ्तार is speed. भागती metro train. Have you ever traveled in metro train? So that will be going very fast and you can cross the cities within few minutes, right? So सबको मेरी आवश्यकता. So everyone needs me. आवश्यकता means तेवर. There is a need of electricity. अब तो बाकी ट्रेनों भी मेरी मदद से चलती है. एंड देयर आर अदर नॉर्मल इलेक्ट्रिक ट्रेन्स विच ऑल्सो नीड्स इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ तक कि जब मेरे ना आने का मन हो, इफ़ आई एम नॉट फीलिंग दैट आई हैव टू कम, दैट इफ करंट इज़ नॉट देयर, ऐसे में तुम्हारे घरों और ऑफिस को बिजली देने वाला इन्वर्टर भी मेरे आने पर ही खुद की बैटरी चार्ज कर पाता है. So in the office and the house which you are using, inverter is used, right, when current is not there. After the current comes, what we do? We charge the inverter, right? So खुद की बैटरी means inverter or battery is charged once the current comes using the electricity. इतना सब कुछ जानकर मेरे बारे में गहराई से और भी बहुत कुछ जानने का तुम्हारा दिल कर रहा होगा ना. Now you got to know more details about me, so you will be interested to know more depth about me, right? Isn't it? உங்களோட மனசு கேட்கும் இல்லையா? Like that the question Bijli is asking to everyone. So you got this much of details about me. Now you want to you want to know more in depth about me, right? Like that electricity is asking the question.
तो मैं मेरी छोटी सी कहानी मेरी ही जुबानी सुन लो. सो लिसन टू माई स्मॉल स्टोरी थ्रू माई word of mouth itself. जुबानी means through my word of mouth itself you listen my story. मैं जहाँ पैदा होती हूँ, where I am created, where I am produced, उस जगह को बिजलीघर कहा जाता है. That is known as बिजलीघर. वैसे तो मेरे उत्पादन का तरीका लगभग 200 साल पहले अंग्रेज वैज्ञानिक माइकल फेराडे ने खोज निकाला था. सो the way the electricity has to be produced, उत्पादन produce production, the production ஓட type இருக்கு இல்லையா, how it has to be produced, that was discovered by the English scientist Michael Faraday. I'll show the image of Michael Faraday. पर भारत में पहली बार लोगों ने सन 1879 में कोलकाता में बिजली देखी. तो फर्स्ट टाइम द इलेक्ट्रिसिटी that came in our country India was in the place कोलकाता in 1879. वर्तमान में पूरी दुनिया में बिजली उत्पादन और इस्तेमाल में भारत तीसरे स्थान पे. एंड द करंट सिचुएशन, द फुल प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इन थर्ड पोजीशन वी आर. व्हेन कंपेयर टू द वर्ल्ड लेवल, द इंडिया इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी इन द थर्ड पोजीशन. He is Michael Faraday who has invented the electricity. So he was born on 22nd September 1791 and died on 25th August 1867. He has died, but still India has not seen the electricity. In 1879 only we were able to see the electricity in Kolkata. After 10 years of his death only, more than 10 years of death only, India got the electricity. मेरे बारे में एक मज़ेदार बात और सुनो. So you listen one more fact, interesting fact about me, which is funful. वैसे तो मेरे पैदा होने के कई तरीके हैं. So there are many ways where I can be produced. मैं अलग अलग चीज़ों से उत्पादित की जाती हूँ. So using different things, raw materials, right, I have been produced. Okay, उत्पादित means it has been produced. So what are the raw materials? So जैसे कोयला coal, तेल the oil, gas, परमाणु की शक्ति is atoms, the energy of atoms, the nuclear power. So उनमें से एक and water. So water is also the raw material to produce electricity. So these are the raw materials which is used to produce electricity in different ways. जब पानी से पैदा होती हूँ, so I am born from water, तो मेरा नाम होता है पन बिजली. पन बिजली is hydroelectric power. So English we say as hydroelectric power. It's पन बिजली. लेकिन पानी से उत्पादित होने के बावजूद, in spite of I am produced from water, मैं सबसे ज़्यादा खतरनाक और जानलेवा भी पानी में ही होती हूँ. So I'll be very dangerous. खतरनाक is dangerous and life taking, जानलेवा भी in water only. इसलिए गीले हाथ पैरों के साथ या पानी में मुझे छूने की गलती कभी ना करना. So having the wet hands and legs or standing in the water, you don't try to touch me. मुझे गीलेपन से इतनी ज़्यादा चिढ़. सो इरिटेटेड विद द वेटनेस. चिढ़ना, इरिटेशन इज देयर. कि पानी के संपर्क में आते ही मैं जानलेवा भी हो जाती हूँ. सो एज सुन एज द कॉन्टैक्ट कम्स विद द वाटर, आई बिकम लाइफ टेकिंग थिंग. सो द इलेक्ट्रिसिटी इज गिविंग अस द कॉशियस दैट विथ वेट हैंड्स एंड लेग्स और स्टैंडिंग इन द वाटर वी शुड नॉट टच द इलेक्ट्रिसिटी. सो मेरे इस चिढ़ को सिर्फ लकड़ी या रबड़ से रोक सकते हैं. सो टू स्टॉप द इरिटेशन, द स्टॉप द इलेक्ट्रिसिटी विच फ्लोज, विच कैन बी स्टॉप यूजिंग द वुड और द रबड़. ओके, रबर. पर वो भी तभी जब वो दोनों सूखे हों. एंड दैट ऑल्सो व्हेन इट इज़ नॉट वेट, व्हेन इट इज़ ड्राई. Even if the लकड़ी और the rubber is wet, then it will pass the current. Okay. आमतौर पर मैं सबका भलाई करती हूँ. So normally if you see, I am beneficial to everyone. I want to do something good for everyone. इसलिए बोल रही हूँ, I am telling that कहीं भी, anywhere, कभी भी, any time मेरे स्विच को हाथ लगाना हो, if you want to touch my switch, तो सूखे हाथ पाँव रखना. You used to have the dry hands and legs. और कोशिश करना कि तुम्हारे पाँव के नीचे सूखी रबड़ या लकड़ी हो. एंड सी दैट अंडर द फीट यू हैव ए रबड़ और द वुड विच इज़ ड्राई. अगर उसकी जगह लोहा हुआ, इफ़ यू आर कीपिंग ए आयरन बिलो अंडरनीथ, तो याद रखना उससे गुजर कर मैं तुम्हें जोर का झटका मारने में मुझे बड़ा मज़ा आएगा. इफ़ यू आर टू गिव ए शॉक. ओके, so if you are having iron underneath, then you remember that I will have more fun to give much shock for you. So झटका मारना में shock अड़िकरतके I will be pass on, मैं उससे गुजर कर I will be pass through the iron, I will give the shock to you and I will have lot of fun doing that.
So what we have to remember, we should not have iron underneath when you are touching the switches. अब अपने बारे में तुम्हें कितना बताऊँ. So about myself, how much I can tell to you. मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, आई एम योर फ्रेंड, और हर काम में तुम्हारी सहायक हूँ. सो इन ईच एंड एवरी वर्क आई एम हेल्पिंग यू. पर इसके बावजूद, बट इन स्पाइट ऑफ दिस, मेरी मदद चाहिए तो सावधानी बरतो. इफ़ यू वांट माय हेल्प देन यू हैव टू बी वेरी कॉशियस. सावधानी बरतो इज यू शुड बी वेरी कॉशियस, वरना अदरवाइज फिर शिकायत ना करना. यू डोंट कंप्लेन मी. जोर का झटका, हाय जोरों से लगा, इट वॉज सो हेवी. सो यू डोंट कंप्लेन दैट द शॉक वॉज सो हेवी. अभी यहाँ से चलती हूँ. नाउ आई लीव फ्रॉम हियर, और मिलती हूँ तुम्हारे ही आसपास. एंड विल सी यू नियर बाई टू यू, बिकॉज वी विल बी यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इन एनी वन ऑफ द अप्लायंसेस अराउंड अस. The very beautiful way the electricity is giving the details of how to use electricity and what are the precautions we have to use. So this is written by Priyanka Gupta. So I'll show you few images to increase your curiosity so that you will learn how electricity is produced using different raw materials. So this is through water, boiler is there and it is connected, the energy is transforming, the steam is produced, and the electricity which is produced is transformed to the electricity converter and goes through the transformers, right, and it reaches the home. So similarly we have different raw materials to produce electricity. So this is, the electricity is produced using nuclear energy, atoms, okay, and this is from the water that comes through the dams. The electricity is produced. So when the water moves from the top and comes down, the energy that is there, which is stored, which has been stored and converted into heat energy and electric energy, kinetic energy, and it moves the turbine, and from that the energy is produced, which is used for household appliances. So this is using the fossil fuels like coal. So how the energy is produced using the fossil fuel. And this is using the coal, how the energy is produced. So we have to use lot of coal as a raw material to produce the electricity. So this is using the gas, natural gas, how the electricity is produced. So this is the coal, if you have not seen coal before. So this is black color coal which helps producing electricity. Just Google and find out which state in India has more coal. This is crude oil which can be used in producing electricity. Using the nuclear energy, the electricity is produced, right? So this is how the plant will be. So this is how the Bijli house, where the electricity, with the produced electricity is stored and it is distributed to the house. How the Bijli house will be, right? The storage of electricity happens here. See how much of thick rods, cables are used to store, and through the transformer it is transmitted to the post and it is given to each and every house using these thick cables. So we have different types of cables for usage. So this is the accelerator which we see, that moves the steps that moves automatically. The lift is also there, and you should know some few safety rules of electricity, okay, which we studied in this lesson also. Let's have a quick introduction about our author Priyanka Gupta. Lekika, so the lady, hence we are using Lekika. So लेखिका प्रियंका गुप्ता को साहित्य के प्रति रुचि का संस्कार अपने परिवार से मिला. So Priyanka got the interest to write through his family. So from family writes itself, she has got an interest to do the writings in the Hindi literature. साहित्यकार माता पिता, and both mother and father are the writer and the author. So because he is child of the author, parents who are author already, she got the interest to write. So साहित्यकार माता पिता के संतान प्रियंका गुप्ता की शिक्षा दीक्षा कानपुर महानगर में हुई. So studied from कानपुर मेट्रोपॉलिटन सिटी. 5 वर्ष की उम्र, when she was 5 or 6 years old, वह बाल कहानियाँ कविताओं का सृजन करने वाली प्रियंका को हिंदी अंग्रेजी के अलावा उर्दू और फ्रेंच भाषाओं के ज्ञान है. सो एट द एज ऑफ 5 and 6 she started to write. सृजन में created. She started to create her writings, stories for children, and she knows Hindi, English, Urdu and French.
इसके द्वारा लिखित 4 बाल कथा संग्रहों समेत कुछ 6 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं. 6 books has been published, प्रकाशित published which is say stories. 4 बाल कथा 4 children's stories collections have been published. जिनमें से प्रथम बाल कथा संग्रह द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन वेयर नयन देश की राजकुमारी को. देन फॉर दिस उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा थ्रू द हिंदी संस्थान विच इज देयर इन उत्तर प्रदेश सुर अनुशंसा पुरस्कार से सम्मानित किया गया एंड इट हैज़ बीन अवॉर्डेड. दिस कलेक्शन ऑफ बुक हैज़ बीन रिवॉर्डेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश लाइक सुर अनुशंसा पुरस्कार हैज़ बीन awarded for this book. Vocabulary based characteristics here. Swachaliत is अपने आप चलने which goes on its own. Okay, you don't have to push it. It will go automatically using the electricity. संपर्क is contact. सहयोग या मिलना. सहायक is the person who helps. So सहायता करने वाला the person who helps. Hope you have understood the lesson. If you have any doubt or clarification, put in the comment section. Surely reply back. Thank you, students.